हेलो एवरीवन, वेलकम टू सफलता बैच क्लास 69। सो आज हमारी 69th क्लास है। इससे पहले की सारी क्लासेस आपको दिल्ली हाई कोर्ट एसपीए नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मिल जाएगी। इन सारे डिक्टेशंस को आप एग्ज़ाम से पहले लिख जरूर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम स्टेनो आर्मी की वेबसाइट पर डेली 2 डिक्टेशंस लिख रहे हैं। यूट्यूब पर मैं आपको वीकली 2 डिक्टेशंस लिखवा रहा हूँ, पर वेबसाइट के ऊपर डेली 2 डिक्टेशंस हो रहे हैं। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। 2 डिक्टेशंस में से आपको एक डिक्टेशन तो फीमेल वॉइस में मिलता है और दूसरा डिक्टेशन आपको मेरी वॉइस में मिलता है। तो ये अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो वेबसाइट पे विजिट करिए। साथ ही में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने इस जो फीमेल वॉइस का डिक्टेशन है वो अपलोड करा हुआ है एज अ सैम्पल। तो उस सैम्पल को आप सुन सकते हो, आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप की जो फीमेल वॉइस है आपको सुनने को मिलेगी। अगर आपको प्रिपरेशन और अच्छी करनी है तो इसको ज़रूर बाय करिए। 999 रुपीज़ पर मंथ का कॉस्ट है। अभी हम 2 डिक्टेशंस लिख रहे हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद हम ज़्यादा डिक्टेशंस लिखेंगे, डेली मॉक टेस्ट भी करेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए जिस टाइप से प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर मैं डेली मॉक टेस्ट लगवा रहा हूँ, वीकली मॉक टेस्ट फ्री में भी करवा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अभी जब तक आपका एग्ज़ाम का डेट अनाउंस नहीं होता तब तक आप 2 डिक्टेशंस लिखते रहिए। आज हम लोग एक लीगल डिक्टेशन लिखने वाले हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। ये डिक्टेशन जो है वो फ्लक्चुएट करके लिखवाने वाला हूँ मैं। मतलब स्पीड जो है वो 110 नहीं रहेगी, ऊपर नीचे जाती रहेगी। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से हमने लिखा था। स्टार्ट करते हैं। गेट रेडी, 3, 2, 1, स्टार्ट। The High Court held that the trial court has committed irregularity in omitting to frame charges, even though the trial court itself has framed an issue on the point of sharing of common intention of accused numbers 1 and 2 in committing robbery and murder of the deceased, which has materially affected the trial. Stop. The High Court further held that the fingerprint expert who had prepared the report ought to have been examined before the trial court, and non-examination of that witness has caused prejudice. Stop. The High Court has taken note of that the trial court has failed to evaluate the possibility of accused number 2 in committing the crime alone without the aid of the appellant, and also that there was no injury on the appellant when he was found tied with the rope in the house of the deceased. Para. It is true that it is open to a high court in revision to set aside an order of acquittal even at the instance of private parties, though the state may not have thought fit to appeal, but this jurisdiction should, in our opinion, be exercised by the High Court only in the exceptional cases when there is some glaring defect in the procedure, or there is a manifest error on a point of law, and consequently there has been flagrant miscarriage of justice. Stop. Section 439 forbids a high court from converting a finding of acquittal into one of conviction, and that makes it all the more incumbent on the high court to see that it does not convert the finding of acquittal into one of conviction by the indirect method of ordering retrial when it cannot itself directly convert a finding of acquittal into a finding of conviction. Para. This places limitations on the power of the High Court to set aside a finding of acquittal in revision, and it is only in exceptional cases that this power should be exercised. Stop. It is not possible to lay down the criteria for determining such exceptional cases which would cover all contingencies. Stop. We may, however, indicate some cases of this kind which would, in our opinion, justify the High Court in interfering
with a finding of acquittal in revision. Stop. These cases may be where the trial court has no jurisdiction to try the case but has still acquitted the accused, or where the trial court has wrongly shut out evidence which the prosecution wished to produce, or where the appeal court has wrongly held evidence which was submitted by the trial court to be inadmissible, or where material evidence has been overlooked either by the trial court or by the appeal court, or where the acquittal is based on a compounding of the offense which is invalid under the law. Para. These and other cases of similar nature can properly be held to be cases of exceptional nature where the High Court can justifiably interfere with an order of acquittal, and in such a case it is obvious that it cannot be said that the High Court was doing indirectly what it could not do directly. Stop. Normally, retrial should not be ordered when there is some infirmity rendering the trial defective. Stop. A retrial may be ordered when the original trial has not been satisfactory for particular reasons like appropriate charge not framed. Stop. ये डिक्टेशन आपका कंप्लीट हो गया है. इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था 115 से लिखना, फिर बीच में 120 लिखा, उसके बाद 110 और लास्ट में 105. तो इस टाइप से फ्लक्चुएट करके हमने इसको लिखा है. अब आप इसको ट्रांसक्राइब कर सकते हैं. फ्री में आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है तो आप अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं, और अगर आपको इसको पूरा ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर पे ट्रांसक्राइब करना है तो स्टेनो आर्मी की वेबसाइट पर आपको डिक्टेशन मिल जाएगा, वहाँ से उसको आप एक्सेस कर सकते हो. इसके अलावा आपको कोई डाउट है इस डिक्टेशन से रिलेटेड या वेबसाइट से रिलेटेड तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हो. एग्जाम से रिलेटेड भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो. पर्सनल टेलीग्राम आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको वहाँ से आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो. इसके अलावा तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय.